hope you all are doing great. I'm Aleesha and I welcome you to Chef Special. Today we're at Sol and it has a great and amazing menu which I'm really excited to see. This is Sol, it's derived from the word soul. They have very neon and retro vibes going on and I'm really excited to learn about their equipment today. So come with me and let's go have a chat with the staff and the owners and see what we can learn from them today. Abhi tak to it's still a little noon, and if it goes into night when these lights are on, I'm sure it's gonna look even prettier. And if it goes later in the night and you wanna sit outside, I'm sure they can make some seatings for you as well. Or winter mein, you know, sitting outside, having a brisket is what they're known for. So much fun. They still have not taken down their Christmas hangings, and in the winter when you come here. So apart from the mural, let me take you guys to the other side and show you the interesting stuff they have here. Apart from the ambience on the other side with the graffiti and murals, I love this side because they still have not taken down their Christmas hangings. Or winter mein aap jab kahin aao aur aap Christmas tree ko dekho with the lights, it's even more fun and you just have the best experience ever. Apart from that, if you look up, they still have all their sock hangings. Oh, we love Christmas and they still have their sock hangings, and you know, seeing Christmas lights in the winter is just so much fun. To be sitting indoors and having this coffee shot along with the Christmas tree on your side, there's nothing that can be better. It's already feeling like it's the best winter ever. We're at Sol and we're going to talk to the owner, Mr. Fahad Moten. He's going to tell us a little about Sol. Hello sir, how are you? I'm doing very well. How are you? Please tell us a little about Sol and tell us how it came to being. So I was always interested in cooking and hosting people. So when I moved back from college, I didn't want to like pursue a regular career with a job and stuff. So I got together with a friend and then we tried out a bunch of different things, and we both had a shared interest in doing barbecue meats. So we started with doing pop-ups with cooking brisket and ribs, and that's where Soul kind of took off from. And then we took inspiration from the word and just delved into like the field of soul food, like food that is comfort and makes you feel nice and warm and fuzzy inside. But this isn't Soul, S-O-U-L, this is S-O-L, Sol. So tell us a little about the name. Where did that name come from and like what does it mean? So it comes from the S-O-U-L, and like basically it was kind of a riff off on Soul Sisters, and we were two guys who were like soul brothers, and then like, no, that's kind of cheesy. So we took it down to just Soul, and then to make it distinct and stand out, we got rid of the U and added the dash on the O. So, but it does come from the word soul. Okay, that is interesting. But also just the fact that you guys were experimenting with your meats, your briskets and your ribeyes, and then how did you guys say, okay, like this is good enough, let's make a business out of it? Did you guys start on social media? Were you guys doing it out of your house? How did that go about? Tell us the story. So the first thing we ever did under the name Soul was Karachi Eat in 2019. Okay. And I had just come back from the States. I visited Universal Studios and I had the Butterbeer over there. There was a failed business venture by the name of Fika we were doing, and we were making cold brew coffee in that. So we had all the equipment to make beverages. So we just, instead of making coffee, we decided to make some sodas. And for Karachi Eat, we did something called Butterbeer. And that was a massive hit with the crowds. And that's like, we took the starting point from there. Okay, like we're doing something experimental and we're doing something different. No one, I don't think any other cafe still is making craft sodas in-house, and we continue to do that. And we just wanted to take that same inspiration with our food. So back in 2019, 2020, we made our smokers and we decided to start smoking meats and, you know, making briskets and sausages and everything. So just gradually and organically, it wasn't a well thought out thing. Yeah. It just like happened as we got to a point we decided, okay, we can do this, and then we added that on. The concept that was at the heart of it, and it still is, that where we can take local produce and stuff that's available locally, and then we can add a lot of value to it. Requires us to work really hard, but it's just, that is the starting point, and that has been the main thing. Anything and everything we do
We try to use as much local produce as available and then add as much value to it as possible. Yeah, unfortunately, a lot of people aren't doing that here using local produce. Definitely. But also briskets. Tell us about that because it takes such a long process and a lot of time to smoke those briskets. So how did you guys go like, okay, we're gonna start doing this and let's see how many customers pull in and then we can serve them in time. How did you manage that time, get that meat out and like still have customers coming for more? So the briskets, they take about 12 to 14 hours to cook. So जब हमने start किया था, we didn't open up as a restaurant per se. हमने pop-up के model से start किया था and this was back in 2019. So back then इतना concept नहीं था pop-ups करने का. So we were just serving on Fridays and Saturdays and Thursday nights को me and my partner हम रात को रुक के खुद ही smoke करते थे briskets को और उसकी prep करते थे. And with time we figured out how to hold it properly for service as well. So how long did you guys make a team and get that together, train them? What was the process like? That process probably took about 12 months to 14 months to get together, where we slowly added on team in the kitchen. Initially it was just me leading in the kitchen and we had like some lower level staff. But a year into doing the operations, we decided that we have perfected the recipe in a way where we can transfer it on. Because initially it was mostly touch and go. So mera physically dekhna to make sure that the product is cooked as well. Because I was learning myself. I'm not from the restaurant industry. I have not gone to school to learn food science or anything. Not even your partner? No, he was an account student. I was an engineer. I studied civil engineering. बस खाने का शौक था. खाने का and hosting का शौक था. More into that, yeah. और interior का बताएं थोड़ा please. Like this is a very hip retro interior going on in Seoul. So tell us about that as well. Yeah, so you have visited our old space. We started out of a home in Clifton and we didn't have a chance to build that up very nicely. So when we got this space, we wanted to give it like a unique kind of vibe, slightly dark but slightly elegant at the same time. So it just came off like that. We had a designer on board, so they did a fantastic job as well. Briskets ke liye you need some kind of like different type of technology to make these kind of things. You need smokers. Yeah. So tell me how you got that over here because you guys are the only ones doing briskets. Smokers and barbecue. Usually when you think of barbecue in Pakistan, people think of tikka and stuff like that. But in like, technically speaking, that is grilling. You're cooking over a hot fire. Barbecue is like when you cook it low and slow over a burning wood fire. And you did not have smokers available back then. So being an engineer myself and being, I'm really into DIY stuff. Me and my partner, we went to some markets in Southern and got some drums and went to a metal fabricator, sat with him for like a week and a half to get those things fabricated ourselves. You really got the equipment and really built it yourself. Yeah. And they're repurposed oil drums. Okay. 45-gallon drums that are used like for shipping liquids and stuff. We got those and we repurposed them to build smokers. So you were already smoking so much like meat. You guys already knew what you needed, the equipment that was needed for making these briskets. That was more of again, an iterative thing. The first smoker we built was a brick-based smoker. We still have that in the Clifton space. The issues with that were that it was huge, and because it had so many bricks in it, it took like 5 hours just to get it up to temperature. And we weren't getting very consistent results with it. So like, as with anything, there are many ways to skin the cat, So there are different kind of smokers. So we built and tried out like 3 or 4 different kinds before we decided on the one that we use currently. That one works. That one works. All of them work. That one works well and works well in a commercial setting that we know how to dial it in exactly. So it doesn't require a lot of work on our end at the moment. Like once you set it up properly and you have a good fire going, fire management wise, it's much easier. The main issue with smoking meat is that we're not using any gas, we're not using any electrical heating elements. It's all like just the smoke. It's a fire that's burning, right? Okay. So you just need to dial in the temperature of the fire that is in a way where it can maintain a certain temperature range so it doesn't overcook the meat or burn the meat, and it's not too low that it doesn't cook the meat and just gives it a smoky flavor. We want to achieve the balance between that. That's really interesting to also be wanting to cook
and then make your own equipment. That's wild. I would for not me, man. recommend that to most people. It's But I like mean, if you're an engineer, why not? Yeah, But tell us definitely. about the food as well. Like, okay, there's one thing you guys do briskets, और आप लोग फिर आपके मेन्यू में और भी इतनी सारी चीजें हैं. So how did you go like, okay, this is soul food, and let me like make all these things and let me try them out. These are my recipes, and then I want to serve these to people. Soul food comes from like a culture of African Americans in the south of US. So, you know, the genre of soul food comes from there. Briskets traditionally come from that as well. Okay, it is considered like, back in the day it was considered the poor man's food because on a ranch in Texas where brisket barbecue comes from, the landlord or the patron would get all the ribs and the nice steaks and Brisket, I think they would say. yeah. I think, yeah. And so the landlords would get all the nice cuts, the tender cuts of the cow, and whatever was left, the really tough, chewy meats, they were left for the slaves to eat on the plantations. And then they devised a way to cook it low and slow for endless hours to make that tough, unattractive meat very high valued and very tender. So we just took inspiration from that, like we're doing brisket and that's the heritage and history of it. And so what else can we do in the same realm? And so mac and cheese and all those comfort foods started to come into place Basically that way. soul food, literally. Yeah. It was very nice talking to you, Mr. Fahad. You too, thank you. Please tell us one last time what we're going to be learning from you today. So today you're gonna see our chef prepare some Texas-style brisket for you, and then he's gonna make some hot dogs for you. Unusual thing about it is like the sausages that he's going to be using is something that we have made in-house, and that's a recipe development that took us 3 years to get to a stage that we're very happy with. Super excited to see how it's going to turn out. Thank you so much. सोल के एग्जीक्यूटिव शेफ से महमूद अहमद से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं प्लीज़ कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से आप इस फील्ड में आए. बेसिकली मैं तकरीबन मुझे 15 साल हो गए. मैंने एक लोकल होटल से स्टार्ट किया था. अच्छा. और वहाँ से फिर जैसे तल्लुकात बढ़ते गए तो बढ़ता गया आगे. तो आपकी अभी इस टीम में कितने लोग हैं? मेरी इस टीम में मेरे साथ किचन में मेरे साथ हैं कोई 12 से 13 लोग हैं. और आपने इन सबको ट्रेन किया है? जी, सबको ट्रेन किया मैंने. तो आप शुरू से मिस्टर फहाद के साथ चलते आ रहे हैं सॉल में? जी बिल्कुल. तकरीबन इनका ओपनिंग हुई थी, उसके ठीक 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया था. अभी माशाल्लाह मुझे यहाँ पे 3 से 3.5 साल हो गए हैं. अच्छा, ने कहा था कि ब्रिस्किट में जैसे इनका जो स्पेशलिटी है यहाँ पे उसमें इतना टाइम लगता है, और अगर यहाँ पे अगर कस्टमर्स का देर लग जाए तो आप किचन में किस तरह मैनेज करते होंगे? देखिए, बिस्किट हमारे पास बेसिकली मेरे पास स्टॉक में पड़ा होता है पहले से ही, तो रखा हुआ होता है पकाने का. अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे तो उसके ऊपर सोल्ट पेपर का टॉपिंग है इसकी. तो रेस्ट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं 2 घंटे 1.5 घंटे, फिर स्मोक करते हैं इसको हम लोग 15 से 16 घंटे. खाने का प्यार और ये शौक आपका कब से शुरू हुआ? मैंने बताया ना मैडम आपको, तो 15 साल हो गए जी. तो बचपन से शौक था खाना बनाने का? जी बिल्कुल, बचपन से ही मैं तकरीबन लोकल होटल से स्टार्ट किया था, तंदूर वालों से. अच्छा. तो वहाँ से फिर मुझे जो है ना शौक लगा इस चीज़ का, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया. अच्छा शेफ़, प्लीज़ बताएं आप हमें कि आज हम क्या बनाएंगे? जी बिल्कुल, आज हम लोग ब्रिस्केट बनाएंगे. ठीक है. और इसके बाद हॉट डॉग है हमारे पास. अच्छा, और वो दोनों आप बना के दिखाएंगे हमें? जी मैं बना के दिखाऊंगा. बेसिकली मेन्यू में उसका नाम सोल डॉग है. ओके. तो वो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, ट्राई भी करवाऊंगा आपको. चलते हैं किचन की तरफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम आ चुके हैं सॉल के किचन के अंदर और हम सीखेंगे उनके फेमस ब्रिस्केट्स विद शेफ़ महमूद. प्लीज़ शेफ़ बताएं हमें कि व्हाट वी आर मेकिंग और किस तरह से बनेगा ये? जी बिल्कुल. ये बिस्किट है हमारा. ये होता है 4 से 5 kg के दरमियान होता है. उसके सोल्ट और पेपर. मगर ये कौन सा कट है? ये अंडर कट का है. ओके जी ठीक है. और सोल्ट और पेपर इसकी टॉपिंग है, मैरिनेशन है. और पेपर जो है वो हम लोग तकरीबन 250 के आसपास लेते हैं. ओके. और सोल्ट जो है सोल्ट तकरीबन कोई 150-200 के आसपास. अच्छा ठीक है. प्लीज़ आप लगाना शुरू करें.
जी, इससे पहले हम लोग सबसे पहले सोल्ट लगेगा इसके ऊपर, तकरीबन कोई 150 के आसपास ग्राम मिर्च। बस इसका मैरिनेशन सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर है? जी, सॉल्ट एंड पेपर है। अच्छा, बिकॉज ब्रिस्केट को 12 घंटे लगते हैं बनने में, हमारे पास इतना टाइम नहीं था शूट में। ये है फ्रोज़न पीस ऑफ मीट, वैसे तो ये लोग करते हैं फ्रेश पीस, तो यह हमें दिखाने के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। और ये कितने लोगों को सर्व करता है एक ब्रिस्केट? बेसिकली ये अगर हमारे पास 3 केजी का भी पीस आ जाता है, 5 केजी का भी आ जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग सर्व कर सकते हैं 8 से 10 लोगों को। अच्छा, ठीक है जी। और सिर्फ सॉल्ट और पेपर की मैरिनेशन? जी मैम, सॉल्ट और पेपर और जी बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सॉल्ट और पेपर लगाने के बाद हम लोग इसको रेस्ट देंगे आधा से 1 घंटे के दरमियान। वेरी नाइस। ये दोनों साइडों पे होगा इसका, एक साइड पे भी होगा, दूसरी साइड पे भी होगा। बिकॉज पेपर इज सो मच आपके नाक में जाता है, तो इसलिए। वैसे तो सॉल में दे यूज़ फ्रेश प्रोड्यूस एंड फ्रेश मीट। अभी क्योंकि इसको 12 घंटे लगते हैं बनने में, हमारे पास वो टाइम नहीं है, तो हमने फ्रोज़न मीट चूज़ किया है। बट वी स्टिल गोना शो यू द प्रोसेस ऑफ हाउ इट्स डन। द मैरिनेशन ऑफ दिस इज़ जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, और ये आराम से 8-10 लोगों को सर्व कर सकता है। जी मैम, ये फ्रोज़न हम लोग स्मोकर नहीं करेंगे, सॉल्ट पेपर लगा के इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। फ्रोज़न इसका जब टूटेगा तो फिर हम स्मोक कर सकते हैं। जी, फ्रोज़न नहीं कर सकते हम इसके इसमें। जी, ये कंप्लीट है अभी। ओके, 1 घंटा 1.5 घंटे। ऑलराइट, ठीक है। तो इसकी मैरिनेशन हो चुकी है विद जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, एंड वी गोना पुट दिस इनटू द स्मोकर। सो ये था स्मोकर जिसके बारे में बात कर रहे थे द ओनर मिस्टर फहाद। इन्हें ये खुद से बनाया है, और अगर आप इसको देखें इस ड्रम को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ इट्स मेड एंड व्हाट इट्स गोइंग टू डू। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि इसको इसमें जब डालेंगे तो फिर क्या होगा। प्लीज़। जी बिल्कुल, हम लोग अभी स्मोक करेंगे इसको। ये हम लोगों ने छोड़ दिया इसको स्मोक में। अभी ये बेसिकली 8 घंटे तक स्मोक होगा। 8 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे बाहर, और 8 घंटे के बाद फिर इसको हम लोग फाइल करेंगे, एलुमिनियम फाइल करेंगे। एलुमिनियम फाइल करने के बाद फिर हम इसको स्मोक कर देंगे 8 घंटे से तकरीबन 7 घंटे के दरमियान। टोटल इसकी टाइमिंग 15 घंटे हो जाती है। ओके। तो ये जी स्मोक के बाद ये रेडी होगा 14 से 15 घंटे के दरमियान। सो 14 आवर्स आपके एक ब्रिस्केट को बनाने में लगते हैं। और अगर आप इस ड्रम को देखें, लाइक आई टोल्ड यू, उन्होंने खुद से बनाया है। कितनी इंटरेस्टिंग सी इक्विपमेंट है ये। उन्होंने कहा था डोंट ट्राई दिस एट होम बिकॉज ऑब्वियसली इट लुक्स वेरी डेंजरस, बट व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज हाउ मच एफर्ट गोज इनटू मेकिंग अ ब्रिस्केट। अच्छा, तो आपने अभी देखा है कि हमने एक ब्रिस्केट रखा है स्मोकर के अंदर, बट बिकॉज इट टेक्स 8 आवर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे पास ऑलरेडी एक तैयार पड़ा हुआ था ब्रिस्केट। सो प्लीज़ इसको निकालेंगे। दिस इज़ ऑलरेडी रेडी इन देयर ओवन फ्रॉम बिफोर, बिकॉज वी कुडंट शो इट टू यू फ्रॉम बिफोर बिकॉज इट टेक्स सो लॉन्ग। दिस इज़ द रेडी मेड वे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। इसमें से धुआं निकल रहा है ऑलरेडी, एंड इट स्मेल्स सो गुड। Oh my God, look at that. और इसकी भी वही मैरिनेशन थी? जी बिल्कुल मैम, वही है। Okay, ये बिल्कुल exactly वही चीज़ थी, but you know because of the time, like I said, we couldn't. But look at that. It's fully charred, fully black, and it's fully marinated. That looks so good. अब इसको हम कट करेंगे। जी मैम। इसके साथ क्या क्या इसकी साइड्स क्या होती है? इसकी साइड मैम मैश पोटैटो होता है हमारा, और पिकल है हमारे, अनियन पिकल है हमारे पास, और खीरा पिकल है हमारे पास, वेजी के पिकल है, साइड है। परफेक्ट। अच्छा, ये वाली जो साइड है कोरियन सॉस है हमारी साइड लाइन इसकी। अच्छा, और क्या? कोरियन सॉस। कोरियन सॉस भी है। वो होममेड है, हम लोग ये इधर ही बनाते हैं, यहाँ पे किचन में बनाते हैं, बाजार से नहीं लेते। ऑलराइट, सही है। अच्छा, ये वाली जो साइड है इनकी सिर्फ बिस्किट के लिए, तो अब हम जाएंगे किचन की तरफ जहाँ पे हम साइड्स प्रिपेयर करेंगे और पूरी बिस्किट की डिश प्रिपेयर करेंगे। सो फॉलो अस गाइस। अच्छा, तो दिस इज नाउ द एक्चुअल किचन ऑफ सॉल। आई लव हाउ दे मेड सेक्शन। जहाँ हम पहले थे वो सिर्फ बिस्किट का सेक्शन था, यहाँ पे पूरी प्रेप वगैरह होती है, स्टोव एंड ऑल। इफ यू कैन लुक अहेड, देयर इज सर्विस काउंटर्स हियर एज वेल. You can look into the restaurant as well. So we're gonna go on to the sides of making the brisket. Brisket के साथ कौन-कौन सी sides दोबारा बताइएगा? हाँ जी, बिल्कुल बताऊंगा मैं। ये मैंने साइड लाइन इसकी हमारा मैश पोटैटो है, ठीक है, और ये अनियन पिकल है, और ये रेड कैबेज है, पिकल है ये भी, और ये खीरा पिकल। ये हम लोग होममेड बनाते हैं इधर, ठीक है, और रेड कैबेज भी होममेड है हमारी, ठीक है, और ये पिकल है खीरे के, ये भी होममेड है हमारी। ये साइड लाइन है इसकी, ठीक है।
तो और अभी मैं आपको बताता हूँ बनाना जी। कैसे बनते हैं। Look at that, you guys! It looks so good. जब भी इसका फॉइल खुलता है तो एक अमेजिंग सी एक खुशबू आती है and I'm just so excited to try it. इसको आप फॉइल में बंद रखते हैं जितना रख सकते जी हैं? मैम, बिल्कुल फॉइल में बंद रखते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होता। ये फॉइल में ही बंद रहता है। ठीक है। जी। और इसके अंदर ऑयल भी डाला हुआ है क्या? नहीं नहीं मैम, ऑयल नहीं? नहीं होता, इसका अपना फेड होता है। ओके। ऑयल नहीं, बस सोल्ड पेपर की टॉपिंग है। ऑयल नहीं होता, ऑयल इसका अपना ही अच्छा, फेड जो okay. तो पिघलते हैं उसको। Okay, this is इसके लिए चर्बी भी लगी हुई थी तो आई थिंक जी। इसका फैट रिलीज होता है फॉइल के अंदर एंड इट जस्ट कुक्स इन दैट। वाओ, look at that. Look at that, you guys. It is perfectly cooked. It still has that pinkness going on, so it's like rarish, I'm ये assuming. अभी जी बिल्कुल स्लाइस काटेंगे हम लोग। या और आप ये इसका, क्योंकि आप जब इसको स्मोकर में रखते हैं आप इसको खोलते तो नहीं होंगे, नहीं मैम, ये फॉइल करने के बाद फिर हम लोग इसे नहीं खोलते। तो आप ये टेम्परेचर कैसे अचीव करते हैं कि ये एग्जैक्टली हम मीडियम रेट पे इस तरह लेकर आएंगे? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर करना है हमारे पास। अच्छा, तो डालिए। फॉइल के ऊपर से हम लोग डाल देते हैं ओके तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसका टेम्परेचर ये अभी कुक हो गया है। ओके। जी। Look at that, you guys. Wow. I'm so excited to see this because इतना बड़ा chunk and you know it's been given so much effort into it. 12 to 14 hours is a lot of time कि अगर गलती से अगर ये आपके पास ना हो, आपकी स्पेशलिटी हो और आपके पास रेस्टोरेंट में आ गया and this is not available, then there's no way you can cook it in time. So you know this is something that really you have to give a lot of time to and it's made out of love, I would say. और ये क्रिसमस में तो लोग आए होंगे बहुत खाने के लिए। जी जी बिल्कुल मैम, बहुत थे मेरे पास, स्टॉक बहुत बना के मैंने रखा हुआ था और वो ख़त्म हो गया था। तो प्लेटिंग के टाइम में हम देखेंगे कि हाउ मच इज ऑन वन प्लेट फॉर अ सर्विंग। ओके। और ये काटने के बाद फिर हम लोग इसको गरम भी होता है तो फिर भी हम लोग इसको पैन में डालते हैं। इसका बिस्किट का अपना पानी होता है, वो उसके अंदर डाल के उसमें टोस्ट करते हैं, फिर सर्व करते हैं कस्टमर को। फाइन जी ठीक है। साथ साथ आप साइड्स भी बनाएंगे हमारे लिए? हाँ जी। ये हम लोग देते हैं कस्टमर को तकरीबन 250 ग्राम के आसपास देते हैं मैम। ठीक है जी स्लाइस। ओके, तो अभी हम इसको करेंगे, सेयर करेंगे पैन पे ना? जी। ओके ठीक है ठीक है। ये इसका सॉस क्या है जो आपने यहाँ रखा जी हुआ? ये बिस्किट का पानी डाला हुआ था, ओके उसमें हम लोग टोस्ट करते हैं इसको चिली बटर के साथ। ओके। जी। और वैसे अगर ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप इसको खोलें और दोबारा बंद करके आप इसको काट के रखें। सो अगर एक सिर्फ इसमें एक बिस्किट में एक ऑर्डर आए तो आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? दोबारा बंद करके आप अपने ओवन में डाल देते हैं इसको? मैम ये होता है कि हम लोग इसकी ऑर्डर बना के रख देते हैं, ऑर्डर बना के थैलियों में वेट करके रख देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। ओके, जैसे ठीक है। वैक्यूम मशीन है हमारे पास, ठीक है उसमें ठीक है। वैक्यूम करके रख देते हैं तो वो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। ओके जी। जी ये तैयार हो गया मैश पोटैटो हमारा। ठीक है। अभी हम इसको प्लेट में लगाएंगे सर्व। ये आपने बताया नहीं मैश पोटैटो किस तरह बनता है? बेसिकली मैश पोटैटो हम लोग बटर लेते हैं, ठीक है। बटर को थोड़ा हम लोग जलाते हैं, पकाते हैं, उसमें फिर हम लोग गार्लिक डालते हैं। गार्लिक के पास सोल्ट पेपर है इसकी टॉपिंग, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्रीम डालेंगे, कुकिंग क्रीम। उसको मैश करके जी आपने मैश इसको करके बनाना रखते हैं। है। ओके ठीक है। वाओ लुक एट दैट यू गाइस। और इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या डाला है आपने? फ्लावर? नहीं फ्लावर नहीं डाला, क्रीम ही है। क्रीम है, मिल्क का क्रीम जी से उससे तो, ये हो ओके। जाती है जी। ठीक। पिकल लगाएंगे, अनियन पिकल। यस ओके। थैंक यू। रेड कैबेज पिकल, एंड ये खीर है। cucumber pickle। जी। और इसके साथ अभी हम लोग इसकी सॉस, इसकी कोरियन सॉस है। ओके ये मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, होममेड है हमारी। ओके। नीचे बेस होगा इसका। यम। अभी हम बिस्किट सर्व करेंगे।
Big pieces of brisket, you guys. Look at that. Wow. Beautiful. Look at that. इसलिए अभी इसकी ऑन साइड सॉस कोरियन सॉस अच्छा अलग से भी डाल के जी देते हैं। मैम। Very generous with the sauces these guys are. Yum. इसलिए टॉपिंग इसकी Alright guys, this looks lovely. Brisket for one please. We're going to be going to our second dish जो है हॉट डॉग बेस बेसिकली हमारी जो हॉट डॉग है सोल्ड डॉग है मेन्यू में सोल्ड डॉग है और उसका जो हॉट डॉग है वो भी हमारा होममेड ही है हम लोग इधर ही बनाते हैं यहाँ पे। Alright. जी It's gonna be so much fun learning that as well. So stick around guys, we're gonna go towards the salt dog. Salt dog. के ऑपरेशन मैनेजर से बात करेंगे हम मिस्टर जाकिर हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ अपने जॉब के बारे में थोड़ा बताएं कि आप यहाँ क्या करते हैं? बेसिकली हमारा जॉब ऑपरेशन मैनेजर का बेसिकली रेस्टोरेंट को हम कैसे रन करना है, रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस को हम कैसे देखना है और इस बेसिकली स्टाफ ट्रेनिंग्स होती है और फूड के बारे में हमारा बेसिकली स्टाफ ट्रेनिंग होती है, फूड सर्विसेज एंड ओवरऑल कॉस्ट को भी देखना पड़ता है रेस्टोरेंट की बेसिक्स। तो ये चीज़ें है बेसिकली। अच्छा तो आपके मेन्यू में कितने डिशेस हैं इसके बारे में भी बताएं थोड़ा। मेन्यू हमारे पास बेसिकली 35 to 40 हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास प्लेट्स हमारा बेसिकली एज मेन डिशेज़ है जिसमें हम ब्रिस्किट हमारा एक मेन आइटम है। ब्रिस्किट हो गया हमारा, रिब्स हो गया हमारा, एज सोल का एक फेमस हमारा आइटम है और बाकी हमारा बर्गर्स इज़ आल्सो इज़ गुड। बर्गर्स आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और आपके स्टाफ के अंडर कितने लोग आते हैं? स्टाफ हमारा फ्रंट का जो होता है तकरीबन 10 की होती है स्ट्रेंथ होती है और किचन की 10 to 15 की स्ट्रेंथ होती है और ये सबको आप ट्रेन करते हैं? जी जी बिल्कुल ट्रेनिंग हमारी होती है बेसिकली। और आप रश आवर में किस तरह टैकल करते हैं सारे सिचुएशन? रश आवर बेसिकली हम लोग स्लॉट्स बनाते हैं, रेस्टोरेंट के स्लॉट्स होते हैं तो हम उन टाइम गेस्ट को टाइमिंग बताते हैं कि भाई आप इस टाइम में और इस टाइम से जो है आपको जो है टेबल मिल जाएगी। स्पेशली जो है वीकेंड्स में जो है रश होता है हमारे पास तो उस टाइम हम प्रॉपर स्लॉट्स बनाते हैं। स्लॉट्स बना के फिर उस हिसाब से कस्टमर को प्रॉपर तरीके से डीलिंग करते हैं। कस्टमर को कॉल करते हैं, कॉल करके बता देते हैं कस्टमर्स को कि भाई इस टाइम पे आपकी जो है स्लॉट्स है तो इस स्लॉट्स में हम कस्टमर को बिठाते हैं। और अगर कभी इन्फ्लेशन हो जैसे आजकल हमारे मुल्क में बहुत होती है तो फिर आप उस तरह कॉस्टिंग किस तरह डिसाइड करते हैं? आप लोग कितने टाइम में अपना मेन्यू में चेंज करते होंगे कॉस्टिंग? मेन्यू हमारा बेसिकली मेरा बहुत से कोऑर्डिनेशन होती है मेन्यू के सिलसिले में। मेन्यू बेसिकली हम 1 मंथ में हम चेंज करते हैं, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं और बेसिकली हमारे वीकली जो है एक नया आइटम हम हर वीक का रखते हैं जो अच्छा, इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सोल अपने बेवरेजेस के लिए बहुत नोन है और बहुत मशहूर है तो आपने कहा था कि आप हमारे लिए एक ड्रिंक तैयार करेंगे तो प्लीज़ बताएं उस ड्रिंक का नाम। ड्रिंक्स हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे ड्रिंक लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारा बटर भी स्पेशल है। उसके अलावा हम ड्रिंक्स में काफ़ी ड्रिंक्स है जो भी ड्रिंक्स ट्राई करते हैं कस्टमर्स लाइक बहुत पसंद करते हैं और आपके लिए मैं अपने बार से बनवा दूँगा एक बेरी मिंट मोजितो है जो हमारा ड्रिंक है वो मोस्ट रनिंग है हमारा जो। Alright, thank you so much, Mr. थैंक यू सो Zakir. मच, थैंक यू। Okay, on to our second dish, which is the salt dog. इनका hot dog बनता है in house and I'm really excited to see कि किस तरह से बनेगा ये। जी मैं आपको बना के दिखाता हूँ सोल्ड डॉग। हाँ। बन को लगाएंगे कट हम लोग। और ये बीफ है? जी बीफ है मैम। और इसको हम लोग बटर लगाएंगे। और इसको हम लोग थोड़ा टोस्ट करेंगे सैलेमेंडर में। Always fun to see the equipment they have in the kitchen. Every kitchen is so different. ये हॉट डॉग हमारा बेसिकली हम लोग बनाते हैं तो इसको स्मोक का ये भी स्मोक ही होता है। तकरीबन कोई 12 घंटे के आसपास ये स्मोक होता है। Okay. जी
और स्मोक होने के बाद ये तैयार तो ये होता है। कौन से कट से बना के आपने इसको हॉट डॉग बनाया है? कौन से कट्स को मिला के हॉट डॉग बनाया है? ये अंडर कट है हमारे पास, बीफ जो Okay. अंडर कट आता है उससे बनाते हैं हम लोग। ओके। जी और बस इसको अंडर कट करके कट करके जी, आप फिर कीमा, इसको हाँ, जी बिल्कुल, कीमा के फॉर्म में इसमें जी करके टेस्ट वगैरह डलते हैं अंदर इसके। कीमा बना के हम लोग मशीन में बना के स्मोक करते हैं इसको। ओके। This is a smoked salt dog of theirs and this is going to be a toasted bread. कितने जी। मिनट रखा है इसको हमने ब्रेड को? तकरीबन 30 सेकंड, बस जितना 30 स्मोक। सेकंड से 1 मिनट में हो जाता है ये। ओके। तो साथ साथ इसके अगर वो हो रहा है हमने इसको भी स्मोक करना होगा क्या? नहीं, ये हो गया मैडम, स्मोक होने के बाद ये तैयार है हमारे पास। Okay, this is कस्टमर ready. को हम लोग सर्व कर सकते हैं अब। जी ऑलराइट। अब इसलिए ये हमारा हो गया, टोस्ट हो गया। अभी हॉट डॉग को हम लोग करेंगे ग्रिल कट लगाने के बाद। ठीक है। ये मैंने कट लगा दिए। फन। जी What a fun little equipment for a hot dog. इससे और भी चीज़ों का कट लगाते हैं? नहीं मैम, इसमें सिर्फ hot dog जी हॉट डॉग का कट लगाते हैं हम लोग। Very nice. और हॉट डॉग पे कट क्यों लगाते हैं? इससे ये थोड़ा शाइनिंग भी आ जाती है और अंदर से भी गर्म जल्दी हो जाता है। ओके, ठीक है। One thing I love about these kitchens is when I come in here, when they have these like shafts that open, because when it gets too hot, I can just open it up and get the AC from the restaurant. ये बेसिकली हम लोग मार्क्स देंगे इसको हॉट डॉग को। जी ये हो गया हमारा। अभी हम लोग सॉस डालेंगे। बेसिकली सॉस है ये, होममेड है हमारी ये भी। ये कौन सी सॉस है? बर्गर सॉस? जी बर्गर सॉस है। मैं चख सकती हूँ? जी मैं हाथ में डाल के मैं चख सकती हूँ इसको। बेसिकली अभी हम लोग जैसे थोड़ा केचप डालेंगे। रिलिश, ओह relish, my favorite. रेलिश डालेंगे इसके ऊपर। Okay. ये रेलिश भी मोड है हमारे पास। Relish किससे बनता है? मैडम ये शिमला, ओके, अनियन ओके। और चिली और इसको पिकल किया जाता और है? जी और खीरा भी और पिकल किया जाता है इसको मैम। ये हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर केचप डालेंगे, मस्टर्ड डालेंगे और केचप डालेंगे। Okay. Classics on hot dog is always just ketchup जी। and mustard, but I like how they've thrown in the relish and all of that stuff in. Yum! Look at that, you guys. इसके ऊपर ग्रिल अनियन डालेंगे हम लोग। Amazing. Grilled onion या caramelized onion? दोनों? ये कैरेमलाइज अनियन भी बोल सकते हैं आप, ग्रिल अनियन भी बोल सकते हैं। हम लोग ग्रिल करते हैं इनको, ठीक है। ग्रिल अनियन बनाते हैं। Caramelize करके जी। फिर grill होता है, so that you get that जी। hotness and that freshness in it. Love it. So fun. अब एक्चुअली ये कंप्लीट है मैम। Alright guys, so the salt dog is done and it's beautiful. जब तक इसके sides बनकर आती हैं और plating होगी, मैं अपनी seat लूँगी बाहर and I'll just go enjoy the vibes outside. Thank you so much, Mr. Chef. थैंक यू मैम। Thank you so बहुत। much. Sorry guys, I was just getting pictures because I love the contrast of these briskets and I love the plating of it. I love the purples going on over here and it just looks really fun and exciting. I'm gonna start with the hot dog क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी bread soggy हो जाए because it has a lot of sauces in it and it's already cut up for me. I love how crispy, if you can hear it, crispy the bread is. I'm just gonna go in for a bite.
Oh my god. I got a lot in that bite. And honestly, unka jo ye yellow sauce hai, which I think is their mustard or was it their in-house sauce, but that was some tangy goodness, man. Oh my god. And you always know how good a restaurant is with the fries they do, because the fries can never be bad. They can always just be better. So they're like wedges, good soaked, have their they have like the skin on it and very rustic. Have the salt going on as well. Gonna go in for another bite so I can tell you guys exactly how I feel about it. You guys, that was so good. I love the smokiness of the hot dog. You really get that, but it's so moist and still like really got those juices going. I love the mustard in it. Now I don't know if that was in-house or not, but it's just so good. It really gives you that kick. The relish and the onions really elevate the dish on a whole other level. क्योंकि hot dog हमेशा आपको लगता है इतना आसान है क्योंकि आप घर पे बना सकते हो या कुछ. It's not as simple. A simple dish like this being elevated the way it is right now is just so good. It's actually phenomenal. I love it. I'm all about it. I'm gonna move to the briskets, because why not? I love how they've started like plating the briskets in these wooden platters, because I love how they always serve these like meats on these platters now. Because thank you. You can't see drink here? Butter beer. Okay, so butter beer is also one of their famous drinks over here. We're gonna get to that in a bit, but moving on to the brisket. Just love the platters because it just makes eating it so easy. And you can just serve like a lot of things on it. I love that about it. So I'm just gonna go in for the brisket that has taken 12 hours to cook. Itni mehnat. Yeah, dekhiye. You can see the fat on it. The fat leaves all the oils. Okay, and you can also see like the skin with all the marination on it. Let's go. There's Korean sauce in this. I'm not gonna put it on because I don't want it to be overpowering. Uske niche bhi lagaya tha. That just melts in your mouth as soon as you put it in. It just falls right in your mouth because it's just so soft. और इसको जितना time दिया इनने के देखें कितना आराम से like it's just cutting like with one stroke of a knife. How smooth is that? Meat never cuts that easy until if it's perfectly cooked. That's just the most amazing cook on that. And surprisingly कि इसकी सिर्फ 2 चीज़ों से marination हुई थी, which was pepper and salt. It is packed with flavor. It has so much flavor in it, I can't even tell you guys. I'm gonna do a huge dip in the Korean sauce. That was hot. That was my mistake. Korean is always spicy. Oh my god. That was so spicy. And the black pepper really came through at that time. I'm gonna go in for the butter beer. If you guys can see, my nose is watering at this point. It's very different from what you'd have. I actually love their butter beer because they also have this served in bottles that you can take home, and we have them in my house a lot. It's a very vanilla-y, frothy taste to it. I don't think it's everyone's cup of tea. It's definitely a preferred taste. इसके ऊपर जैसे it's like a float. इसके ऊपर cream डाला हुआ है और इसके नीचे butterscotch की और vanilla taste है. I don't know how to explain it to you, but it's just the best. Okay, let's try the mashed potatoes because we love mashed potatoes. This I could eat on its own. Mashed potatoes. So I just love the texture of it. Like it's so smudgy, but it's so yummy. These I would say are the perfect mashed potatoes because just the flavor wise, texture wise, and just everything. Pickled onions, my favorite. I love onions. I'm gonna make you guys one big bite that I'm gonna eat for myself. I'm gonna get some onion on it. Wait, some pickled cabbage on it.
And that's the bite I'm gonna have for you guys, in a way. I'm very impressed by this whole dish. I generally love briskets, but just to learn how it's made and the process behind it is just like you just really give it that much respect, because to give this dish 12 hours and you can really feel the hard work gone into it on its own. Like, I know आप marinate करके उसको छोड़ देते हो, but the patience that is required to have this dish is just amazing, because it's flaky, it falls off, it's smoky, it has a perfect crust on it with the pepper and salt marination. It's just still packed with flavor. So I have so much newfound respect for this dish, all because I saw how it's made. So I have so much newfound respect for this dish because I just saw how it's made, given the 12-hour cook, the patience required कि सिर्फ इतनी थोड़ी सी marination के बाद भी इतना flavor इसके बावजूद हो. I love this, and thank you so much, Sol, for showing us how it's made. Apart from that, Sol is located at Khaiban Nishat, and it's just a wonderful vibe. Everything about it is just so much fun to be at. They have a range of things in their menu. Their drinks are just amazing. That's how they started with beverages. There's like open views you can see outside when you're sitting and eating. You can come have shared meals with your friends and family. That's what I love about food the most. You can come and have shared meals, and that's the best thing, you know, just enjoying a meal together. Thank you guys so much for watching. I'm gonna get back to eating. I'll catch you guys next time. Take care. Bye.